Hello, welcome back to my channel. Today I'm about to share all the crazy things that happened to us in our Uttarakhand trip. So let's get started. Where are we going? Dehradun. तो फ्लाइट से सनराइज देखते ही सुबह सुबह हम पहुंच गए देहरादून एयरपोर्ट। वहां पहुंचते ही दीप के एक दोस्त ने हमें पिक किया, हु इज़ बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड, एंड ही टुक अस टू दिस अमेजिंग ब्रेकफास्ट स्पॉट नियर देहरादून एयरपोर्ट। जाने का रास्ता इतना खूबसूरत, जगह उतनी खूबसूरत, और वहाँ के आलू प्याज पराठे, ओ माय गॉड, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया। आई थिंक दोज आर द बेस्ट parathas that I've had in entire Uttarakhand. Must visit place, guys. Please note it down. पहाड़ों वाली धूप भी अलग ही होती है. After this short breakfast meetup, we went back again to the airport to pick up the other half of the trip, which is Ritika and Janil, who are my besties from my school. फोन भी है ये ना देने चाबी। तो वो मेरे पास है शिट मैन Welcome to Uttarakhand, guys. मैडम वो मेरे पास एक बात बताओ, it is surreal how we got married 5 years apart but exactly in the same week, and this is us celebrating our anniversary trip together. Can you believe it? Yes. तो फिर क्या शुरू किया हमने ट्रिप, एंड वी टुक देम एग्जैक्टली टू द सेम ब्रेकफास्ट स्पॉट. यस, विद इन 1 hour का डिफरेंस अगेन, फॉर देम टू टेस्ट दिस वर्ल्ड बेस्ट माइंड ब्लोइंग पराठास. दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी न बीते चमकीले दिन. दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन. दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा. हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ. दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन. दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन. तो ऐसे ही पहुंच गए हम हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन चक्राता में. इट टुक अस ऑलमोस्ट 5 to 6 hours फ्रॉम देहरादून एयरपोर्ट टू रीच चक्राता, एंड दिस पर्टिकुलर स्टे was almost 1 hour away from Chakrata. We found this beautiful glam site in the middle of literally nowhere. कोई नहीं था आजू बाजू, जस्ट अस एंड स्टार्स एंड मूनलाइट. एनिवर्सरी ट्रिप शुरू करने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता था. So come along while I take you through this amazing room tour. Just look at how cozy and cute this room is. And listen, if you want to know the name of this place, you have to be glued to this video. चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते. चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते. हे बेस्ट फ्रेंड, मेरा पति तो बाहर घूम रहा है. कैसा लग रहा है? Very nice, amazing, हाउ इज दिस प्लेस? super amazing. Our first trip together as I'm excited. Yay! Even I am so excited. Day 1 of the trip. तो अगले दिन मैं उठ गई सुबह सुबह एक्सपेक्टिंग टू सी सम स्नोफॉल, क्योंकि बातें तो हमने सुनी थी कि इट्स एक्सपेक्टेड टू स्नो,
बट कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट इट वॉज जस्ट रेनिंग एंड फ्रीजिंग. व्यू तो देखो, और क्या बारिश हो रही है कॉन्स्टेंटली. और हमें पता चला कि रास्ते में बहुत सारा स्नो हुआ है. तो वी आर अ लिटिल स्कैर्ड, skeptical, excited, all of it. So yeah, we are on to our next hotel, which is the Sidus Galaxy. This one, okay, I have to mention this. So this property is called Sthalika. We asked him, "Ki, what does this mean?" He said Sthalika means Ekant. And this stay truly justifies the name, because just see, we are literally only two couples in the middle of nowhere. It's just freezing here, freezing to death. What is the temperature right now? -1. It is -1. And let me show you something. So this one is a scarf made by my mom. She's knitted it herself, the colorful scarf. It looks so beautiful with everything that I'm wearing. So yeah, thank you, mom. तो इसी तरह निकल गए हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स. और ऑनेस्टली आई वाज सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग कि थोड़ा सा स्नोफॉल दिख जाए यार. सो चैनल, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? Yes. यस. देखा, टेंशन मत ले. Yes, ऐसे आ we गया are all excited. I want to be focused because it's raining. I and want to there's be snow. focused, but are you driving? But I am supporting the driver. Supporting the driver. तो ध्यान से देखो, यही है वो मोमेंट जो स्टार्ट में तो मैजिकल लग रहा था और आगे जाके नाइटमेयर बन चुका था. यस, इट फाइनली स्टार्टेड स्नोइंग. मायनी मेरी है शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर. ओ शिमले नी वसना कसौली नी वसना. शिमले नी वसना कसौली नी वसना. चंबे जाना जरूर है. चंबे जाना जरूर. मायनी मेरी है शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर. तो सामने से आने वाले लोग तो ऑलरेडी हमें वार्न कर रहे थे कि आगे मत जाओ, लेकिन हमने सोचा कि नहीं नहीं, हम तो पहुंच जाएंगे, इतना टाइम तो लगेगा भी नहीं हमें. लेकिन जस्ट लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ स्नोफॉल इन जस्ट हाफ एन आवर. क्या हो गया जनरल? व्हाट इज द अपडेट? कुछ नहीं, फंस गए हम थोड़ा थोड़ा. स्नो में गाड़ी अटक गई है 1 फीट स्नो में, और अब हम कुछ नहीं कर सकते. This is our car and we are stuck, not able to go out. वो करना पड़ेगा तो बैठ सही काट के लेनी पड़ेगी ना. बैठो सही. बैठो ना, अंदर कोई दूसरा बैठो. और कोई और बैठो. और बैठना आप. बैठो भाई जी. भाई जी बैठो यार. बैठो बैठो. मतलब आप टेंशन नहीं जाती कहीं, बस ब्रेक मत मारना. These guys are helping us with the car. It's stuck. But surprisingly, I am not stressed at all. I'm so excited.
गेम ऑफ थ्रोन्स. सो अपडेट इज कि हम अटक चुके हैं. हम आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते. गाड़ी अटक चुकी है बुरी तरह से. लेकिन मेरे भाई ने कॉल करके एक होटल का सजेशन दिया जहां हम चल के जाएंगे और होपफुली वहां पहुंचेंगे. आगे का अपडेट फ्रॉम द होटल. सो यहाँ शुरू हुई हमारी होटल जाने की तैयारी. फटाफट से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में सबने अपने 2 जोड़ी कपड़े निकाल लिए छोटी सी बैग में. एंड देन वी स्टार्टेड टुवर्ड्स द मोस्ट सरियल ट्रेल ट्रैक ऑफ आवर लाइफ. ऑनेस्टली हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता. आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. जो डेडिकेशन से मैं व्लॉग निकाल रही हूँ, मुझे अगर ये डेडिकेशन से तो मुझे चाय पीऊंगी, कुछ भी पीऊंगी, खाऊंगी. बर्फ गिर रही सर रात में तो. गुड डिफरेंट एक्सपीरियंस. लेट्स गो. कहाँ जा रहे हैं? क्या है ऊपर? सुकून. सुकून. होटल सुकून. होटल सुकून. चलो भाई. वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई ऐसा वैसा होम स्टे नहीं, ये स्टे मिला था हमें रहने को. सो ये एक ब्यूटीफुल सा 2 स्टोरीड कॉटेज था. दो द सर्कमस्टेंसेस वर नॉट दैट ग्रेट. इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. ऑब्वियसली हम इतने भीग गए थे. बट बिलीव मी, दिस इज़ वॉट मेड इट द मोस्ट मेमोरेबल नाइट ऑफ द ट्रिप. लाइक एस्केप भी क्या बढ़िया सा मिला है यार. जस्ट लुक एट द व्यू आउटसाइड. आइए. हाँ. पानी पियो भाई, पानी. तो अगली सुबह फिर से उठ गई मैं सबसे जल्दी एज अ मॉर्निंग पर्सन. एंड टू माई सरप्राइज स्नो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो चुका था. यू कैन सी द डिफरेंस राइट. बस इट वॉज एक्साइटिंग कि फाइनली वी आर गोइंग टू गो बैक. एंड येस, वी एन्जॉयड आवर स्टे. थैंक यू होटल सुकून. बाय द वे, जितना आसान लगा था उतना इजी नहीं था. नेक्स्ट दिन हर जगह ब्लैक आइस हो गई थी और कार्स फंस रहे थे, अटक चुके थे ट्रक्स. वी लिटरली हैड टू पुश आवर कार बीच बीच में उतर के. एंड दैट इज़ हाउ फाइनली वी रीच्ड आवर नेक्स्ट ब्यूटिफुल स्टे. सो नो कंप्लेंट्स देयर. Always ready. गाजर का हलवा. As you can see, what followed was a night full of enjoyment and relaxation of the 2 days. Gulab jamun. And then we have jaldi. Then we have Milkshake. oh my god, that's brownie with
vanilla ice cream Melted. melted. So here's presenting Hotel Sidus Galaxy. इन वादियों में टकरा चुके हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी किससे सुने यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या है He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me नाक कैसा मशरूम जैसा है. हेलो हाँ My nose is looking like a mushroom. This is day 4 of our trip when we are finally in a comforting hotel space. Look at the view from the balcony. It's so beautiful. And that's the entire room. After all that snowstorm, staying in Hotel Sukoon, then yesterday the entire day went in like coming to this place because there was dry ice everywhere. There were like roadblocks, dry ice, JCB coming, so much happening that it took us a long time to reach here. We got so little time in this property, but this is such a pretty looking property. I really wish we had more days here, but I am so happy that we finally could do this trip. So this trip was such an end moment planned trip, but it just happened and I'm so happy. So that's it. That was the checkout, guys. We really wish that we could have stayed both the days there, but nature had some other plans. So yeah, we started going to Mussoorie. On the way, we stopped at Yamuna Bridge, which was in between Chakrata and Mussoorie. So not like we wanted to do anything touristy, but we genuinely enjoyed halting here for a bit. And this is exactly where Deep found a heart-shaped pebble for me for our first anniversary trip. And that's the keepsake for life. पार करके लेफ्ट
हाँ, ये थी हमारी मसूरी की प्रॉपर्टी। भाई पहुँचते साथ मज़े आ गए। गोल्डन आवर वाला वेलकम, और क्या चाहिए। Wow, that's the kitchen. Superb. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। तो पहले ही दिन निकल गए हम मॉल रोड एक्सप्लोर करने। शॉपिंग तो करी नहीं, लेकिन बहुत यमी फूड खाया। गाइस, रेडी फॉर मॉल रोड। ये सड़कें अनदेखी सी हैं, ये राहें भी अनजाने, ये खुली खिड़कियां है, मस्ती में हवा है, मस्ती में हम और तुम और ये वादियां, ये सुबह की मासूमियां है, चलते जाने की तमन्ना, ये नीला आसमां क्यों खुश है बेवजह है, मस्ती में हम और तुम और ये वादियां, चलते चले हम मुड़े या गिरे बेखौफ होके। One year with this paglu. For the people who know me, my sisters, my best friend, they know the importance of this song in my life. And yeah, we missed Charlie. By now, everyone knows about my obsession with mornings. So yeah, this was our anniversary morning, and that entire day we spent in Landor, eating the best food, visiting the best places, and oof, look at the view from our villa. For anyone visiting Landor, Ivy Cafe should be on the top of your list. That is exactly where we went first when we reached Landor, and then started exploring the entire rest part of Landor. Damn cold, man. Very. After that on our list was Char Dukan, sunset from Lal Tibba, and honestly, this beautiful walk with the friends. धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें, शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के
ख्यालों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। Ended our anniversary night and also the last night of this trip with this beautiful bonfire and some heartwarming conversations that we'll never forget. I think a trip is not complete without such moments of slowing down. And that's it. That is how our 5 days just flew by. This was the moment when we had to check out, and I was really sad. For anybody wondering which place was this was Brisa Cottage on Airbnb. And what a view, guys. All set, Janil, for the next 2 days of your trip. Wonderful 5 days. Yes. In Uttarakhand. Janil कितना too good. अब बोल रहे हैं कि स्नोफॉल होने वाला है फिर से कल. मजा करेंगे इसी में। Yes. Deep. Last pose. अपना ये स्लोगन क्या है ये ट्रिप का? कुछ तो होना चाहिए ना. Oh my God. Beautiful. Next up is 19th Century Cafe. ट्रिप खत्म नहीं हुआ गाइस. That's it, guys. That was my Uttarakhand vlog. If you've liked it, please share, comment, and subscribe to my channel. See you in the next vlog.